StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and namaste. Today we are going to talk about UPI, which is the main fuel behind India's digital revolution, something that the world across is taking cognizance of. आज के दिन चाहे वो चाय हो या चर्चा, सब जगह पे पेमेंट चलता है यूपीआई का. Today people prefer to pay via their phones rather than carrying their wallets. From buying expensive designer clothes to buying medicines at a pharmacy, सब जगह चलता है UPI. It is the most preferred mode of transaction in India today. So you can understand why the world, countries like Saudi Arabia and Bahrain are actually thinking of opting for UPI. So let us first understand कि ये डिजिटल रेवोल्यूशन जो है, जो लोकल से ग्लोबल जा रहा है, उसका टाइमलाइन क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है ये. We have to begin from 2009. That is when NPCI, that is the National Payment Corporation of India, was established. Now, NPCI का main agenda क्या था कि they had to simplify and come up with a solution of कैश ट्रांजैक्शन, बिकॉज इंडिया में उस समय काफी ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन हो रहा था और क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट की जाए तो वहां पे यू हैड टू पे एन एक्स्ट्रा फी. सो इसके वजह से पीपल वर ऑलवेज प्रेफरिंग टू गो फॉर अ कैश ट्रांजैक्शन एंड द एनपीसीआई वांटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. In 2011, an RBI report is released, which is published in 2012, जहां पे clearly mention किया जाता है कि an individual in India performs only 6 non-cash transactions in a year. And this is one of the factors, just one of the factors that was behind the black money and the corruption that was prevalent in India. In 2016, as a result, UPI is released. And तब से लेके आज तक UPI में काफी ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जिससे ease of use of UPI has increased. And that is precisely the reason why across India today, more than 65% of transaction is happening through the UPI. अगर हम बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन फ्लो कैसे होता है, वी हैव टू गो बैक टू द टाइम जब हम बैंक जाया करते थे और एक विड्रॉल फॉर्म में 16 या 14 डिजिट का बैंक अकाउंट नंबर लिखते थे. अलॉन्ग विथ इट हम आईएफएससी कोड लिखते थे, स्विफ्ट कोड, ऐसी कई सारे डिटेल्स लिखते थे. एंड इट वाज बहुत रिस्की था क्योंकि एक भी डिजिट अगर गलत हो गया इट वुड लीड टू केओस. तो इसी वजह से इट वाज वेरी क्रूशियल थिंग कि आप बैंक में जाओ एंड सब डिटेल डबल चेक करके लिखो. अब ये पूरा प्रोसेस आप इमेजिन करो कि सब कुछ हट के एक सिंपल वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बन गया है. अब ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इज अ वेरी यूनिक आइडेंटिटी, अ फाइनेंशियल आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. अब आप ये जो वीपीए है, आप सोचिए अब आपने कोई भी ऐप यूज़ किया जैसे कि भारत फ़ोन पे या गूगल पे या भीम, ऐसे कई ऐप्स हैं मार्केट में. तो आपने वो ऐप डाउनलोड किया, उसमें आपने वीपीए बनाया, अपना केवाईसी किया. केवाईसी का फॉर्म आरबीआई का मैंडेटरी है, तो आपने केवाईसी फॉर्म भरा और आपने वो वीपीए एड्रेस से आप अभी कैश एज इन यू कैन हैव ट्रांजैक्शंस, इमीडिएट रियल टाइम इंस्टेंट मनी ट्रांजैक्शंस in which you can not only receive money, but you can also send money to another VPA. This is how it has become so simple. So from your mobile, you put your VPA address, that is your own address. You also put the address of the sender or the receiver, and that will go to the UPI interface, wherein the instructions will be sent to the relevant banks, which will process the payment in real time. And that ease of, again, I'm repeating the word, ease of use is what fueled so many people in adopting the UPI. Now, there is one such feature in this whole process, which is interoperability, that has led to further ease of use. Now, what does interoperability mean? That there are multiple apps such as, again repeating myself, phone pay हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, व्हाट्सएप हो गया, भीम हो गया. ये सब apps एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं आपके मोबाइल पे.
आप उस इंटरफेस में लॉग इन करते हैं. देयर इज ऑफ कोर्स अ पास कोड, यू हैव टू एंटर, यू हैव टू पुट योर VPA एंड देयर इन यू हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस किसके लिए? ट्रांजैक्शन के लिए. फाइनली जो ट्रांजैक्शन होगा वो RBI के अंडर ही होने वाला है. इट्स अ वेरी सिक्योर वे ऑफ ट्रांजैक्शन. बट जो आपके लिए इंटरफेस है वो कई एप्स ने डेवलप किया हुआ है. ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऐप आपको सूट करता है, कौन सा ऐप आपको समझ में आता है, एंड इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज इट. सो यू आर नॉट ट्रैप्ड बाय एन ऐप. और अगर कोई ऐप चल नहीं रहा है, कोई फी ले रहा है, तो आप इमीडिएटली उसको छोड़ के कोई और ऐप डाउनलोड कर सकते हो. यू आर एब्सोल्युटली नॉट ट्रैप्ड बाय इट. एंड दिस choice that has been given, that is another reason why customers are going towards the UPI mode of transaction. Interoperability is something that is seen as a key to the success of UPI. अब चलते हैं और कोई रीजंस जिसके वजह से UPI हिट हो चुका है. सबसे पहले तो कन्वीनियंस है. ऑफ कोर्स वाली बात है कि यू आर कैरिंग योर फोन विथ यू, वही काफी है, वही वॉलेट है आज के दिन पे आपका. जहां पे भी जाना है फोन निकाला, ऐप ओपन किया, स्कैन किया, पेमेंट इमीडिएटली डन. ना कोई चेंज की झिकझिक, ना कोई कैश लेने की झिकझिक, या ऐसा भी नहीं कि गंदा नोट, फटा नोट, ये सब खत्म. सिर्फ और सिर्फ एक ऐप से पेमेंट हो जा रहा है. सेकेंड है इनोवेटिव एंड रिलायबल. इट इज ऑफ कोर्स एन इनोवेशन in the mode of transaction and it's a very reliable. जब तक आपके पास अच्छा नेटवर्क मिल रहा है, it's a very reliable source of transaction. तीसरा है simple and individualistic. What do you mean by individualistic? वही बात VPA. The virtual payment address, it's an individualistic identity. हर individual का अलग VPA होता है. VPA क्या होता है? आपका नंबर हो सकता है, टेलीफोन नंबर @OKSBI हो गया, UPI हो गया, @OKAccess हो गया. ये जो एड्रेस है इसे VPA कहते हैं. ये सबका अलग अलग होता है, इंडिविजुअल होता है, एंड दैट बेसिकली लिंक्स इट टू योर बैंक अकाउंट, राइट. सो काफी इंडिविजुअलिस्टिक है. तीसरा है इंक्लूसिव. अगेन इसी साल के बिगिनिंग में RBI का रिपोर्ट आया था जहां पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो पहले the areas where the transactions were largely cash, for example rural areas and semi-urban areas, वहां पे भी आज के दिन UPI का काफी यूज होने लगा है. Now this has been fueled by of course the Jan Dhan योजना, जहां पे पहले इतनी लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था. Under this योजना they have access to bank accounts. Secondly, the UPI has again made them shift from cash transactions to the UPI. So this report absolutely mentions that areas or people or communities which were outside a certain mode of transaction have now been included in it. चौथा है security. RBI के security के अंडर पूरा UPI का transaction चलता है. आप any transaction or any instruction that you are sending through the app is under the RBI security, which means that there is absolutely complete guarantee of RBI that the money is not going anywhere. The transaction is as safe as you do it in a bank. Last is citizen-centric. Now UPI, the main agenda was कि citizen को empower किया जाए to make more secure transaction. They are not dependent on the bank. They can do it on their own, and that is the reason why it is very citizen-centric. And all of these features is what has made UPI such an attractive technology that countries across the world is now looking at it. Now, let us talk about the impact. यहाँ पे I'm going to take in two reports. एक report RBI का जो ईयर के बिगिनिंग में आया था अराउंड मार्च में, और एक रिपोर्ट जो जून 2023 में रिलीज हुई है बाय द इकोनॉमिक फोरम. नाउ जो जून 2023 की रिपोर्ट है वो क्लियरली मेंशन करती है कि मई 2023 में ओनली इन दैट मंथ अराउंड 9.41 बिलियन ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस. 9.41 billion. And how much was it worth? According to the report, it is worth 14.89 lakh crore rupees. 14.89 lakh crore rupees. Now, this is approximately 3,600 transactions per second.
And this is what has made India a leader in terms of real-time payment transactions. It is around 48.6 billion transactions that have been processed in 2021 alone. China comes at the second position with around 38%. The RBI report further states that, which was released in March 2023, states that from April 2016 to February 2023, approximately 300 lakh crores rupees was actually transacted through UPI. 300 lakh crores INR. The report further states that इतना अमाउंट का ट्रांजैक्शन अगर कैश से होता या कार्ड से होता, चाहे वो क्रेडिट या डेबिट, तब इकोनॉमी पे एक कॉस्ट आता. क्यों? उतना हार्ड करेंसी के प्रिंट के लिए या कार्ड के यूसेज के लिए there would be a cost entailed to it, and that cost was approximately 5.5 lakh crore that the economy would have had to pay अगर ये transaction amount कैश या कार्ड से होता. बट बिकॉज ये यूपीआई से हुआ है, इतना पैसा बच चुका है इकोनॉमी का. इकोनॉमी डिड नॉट हैव टू spend on this, and this is where it is beneficial for the Indian economy as well, as more and more people transact through the UPI, leaving the cash transaction. The economy is also benefiting from it. Now let's understand why it is going global. By now I'm sure you would have understood कि ऐसे amazing features है UPI में जिसके वजह से countries are really looking at it. स्टार्टिंग होती है भूटान से 2021 में, उसके बाद नेपाल, सिंगापुर, रिसेंटली सिंगापुर से बात हुई है, जहां पे यूपीआई का अडॉप्शन हैज बीन फाइनलाइज्ड. आज के दिन देयर आर मल्टीपल अदर कंट्रीज जहां पे ट्रांजैक्शन को लेके डिस्कशन हो रहा है, बट मोर और लेस मोस्ट कंट्रीज आर लुकिंग एट यूपीआई एज अ सोल्यूशन, स्पेशली फॉर रेमिटेंसेस. अब रेमिटेंसेस क्या होता है? Remittances is basically the money sent by NRIs back to India. चाहे वो salary हो, savings हो, कुछ भी हो, the money that the NRIs send back to India is largely known as the remittances. Yeah, and this remittances India is proposing कि UPI के through हो जाए rather than through any other network. अब समझते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है. जब भी हम पैसा भेजते हैं या we receive money when we are abroad, or money is coming to India from abroad, it is through the SWIFT network. Now this SWIFT network is under the G10 countries along with the Central Bank of Europe as well as the Central Bank of Belgium. Largely G10 countries के अंडर है ये. अब ये जो SWIFT network है, इसी के through all financial transactions take place. Most of them. You can almost say around 85% स्विफ्ट नेटवर्क के अंडर ही होता है. चाहे वो पेमेंट आप घर भेज रहे हो या कुछ सामान खरीदने के लिए है या कन्वर्जन कर रहे हो करेंसी का, जो भी है वो स्विफ्ट नेटवर्क के अंडर ही आता है. अब फरवरी 2022 में जब यूएस को रशिया के ऊपर और सैंक्शंस डालना था, दे हैड टू टाइटन अप मोर इकोनॉमिक सैंक्शंस. व्हाट डिड यूएस डू? It immediately pushed out Russia from the SWIFT network, which means that foreign economy, that is Russian economy, which was completely dependent on the SWIFT network for its income, for its cash coming in from its diaspora, suddenly वो पैसा नहीं आ रहा है. And they had to come up with a solution कि क्या किया जाए, क्योंकि पैसे तो अभी नहीं आने वाले. यही चीज को अवॉइड करने के लिए इंडिया हैज स्टार्टेड प्रोमोटिंग यूपीआई. इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि फिनटेक सॉवरेनिटी क्या होती है. ना सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि you take decisions without the influence of anyone else. There is absolute independence in what kind of decision and to what end. That is sovereignty. अब फाइनेंशियल सॉवरेनिटी प्रीवियसली सभी कंट्रीज का स्विफ्ट नेटवर्क पे डिपेंडेंट है, अभी भी है काफी हद तक. बट यूपीआई एक ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि यूपीआई फंक्शंस आउटसाइड द स्विफ्ट नेटवर्क, एंड एनी कंट्री मूविंग टुवर्ड्स यूपीआई वुड बी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द G10 कंट्रीज. तो आप समझ ही सकते हो कि अगर फ्यूचर में इकोनॉमिक सैंक्शंस आता है किसी कंट्री पे भी, दे आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट कि G10 कंट्रीज क्या करना चाहते हैं.
If they adopt the UPI, then they have the freedom to have that transaction outside this network. And this is precisely what fintech sovereignty means. This is what is attracting countries, especially global south, developing countries. आप चाहे सिंगापुर की बात करें, भूटान की बात करें, या आप ओमान की बात करें, यूएई की बात करें, यहाँ पे सभी कंट्रीज दे वांट टू मूव आउट ऑफ दिस यूएस डोमिनेंस. They want to adopt a technology जहाँ पे they can maintain their sovereignty. Because at the end of the day, financial sovereignty, independence काफी important चीज है कोई भी nation के लिए. And this is the solution that has been promoted by India, that is UPI. आज के दिन अगर आप पीएम मोदी जी के स्पीच सुनते हैं तो वहां पे he has clearly mentioned that UPI is a public good that India is willing to share with the world. He has clearly said that this is inclusive, it is empowering, and this is a way that the global south countries, that is the developing countries, can actually form a partnership. And this idea of partnership is in sync with what India is promoting. That is Vasudevaya Kutumbakam. The world is one family. अगर हम एक साथ होके global problems को solve कर सकते हैं, अगर हम एक साथ होके American hegemony चाहे या Chinese hegemony को, we can push it away, why not? And UPI has that solution. UPI gives that financial sovereignty to the countries. And that is precisely the reason why we are hearing countries adopting UPI or ready to adopt UPI as we speak right now. With this, we come to an end of this discussion. Thank you. StudyIQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.